Yes, ma'am. So we'll start. Yeah. How many students are joining today? There should be 60. Yeah, they're joining one by one. So we'll Okay. start. They'll join in between. No, because I can wait for 5 more minutes. That's not an issue. Okay, fine. We'll wait for 5 Because more. Yeah. what will happen if somebody has missed, then it will be very difficult for them to connect. Okay, fine. Then we'll wait for 5 more minutes. Yeah, Let them that's join in fine. then. No issue. Yeah, Okay. I can wait for 5 minutes. No hurry. But Okay. let everyone join. Then they can also understand. Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Definitely. Fine.
Ma'am, namaskar. Namaskar, sir. I think we should start now because Yes. time will run out. You know that Yes. that's another issue. Yeah. Anyway, so shall I start? I'll introduce you, sir. Good Okay. morning, students. Good morning, ma'am. Good morning, Good ma'am. morning, sir. Morning, ma'am. Morning, Good morning, ma'am. Good sir. morning. Good Very good morning. morning, ma'am. Morning, ma'am. Today Morning, we sir. have a very prominent guest with us, Mr. Manohar Nimbore from Lalit Golf and Spa Resort. Mr. Nimbore has more than 15 years of expertise in field of training. Yes, ma'am. Okay, not in India, also in abroad. Okay, so we welcome you, sir. Thank you, Over to ma'am. you. Thank you so much. Thank you so much. First of all, thank you so much for you and the entire, management of institute for giving me an opportunity to, to talk to with you and they interact with all the students. This is a great pleasure. This is almost I've completed almost 13 to 14 webinars for the colleges. But this is so special for me because I based out of Goa. And in Goa, this is the first session what I'm conducting. However, we are Okay. conducting a lot of trainings for the our employees, but this is something special because sorry, when we're conducting sessions for these employees, you know, they have experience. But when we're connecting with the students in the college, this is something different. Because once upon a time, I believe we all were students, and I was also a student. So we all go back to those memories. So yes, it is very much important for me. Okay. So before I begin, I request all the participants to mute their phone. Please mute your phone because we have more than 40 plus students who are online. It will be a very difficult if everyone starts talking, so you will not understand if everyone starts speaking over a phone. So I request, please mute your phone. You can mute your video also. We do not require video. Second, if you have any questions, you write down in your diary, or you can use a chat box, which is just the available on your screen at the bottom. You can ask me questions there. I will give you at the end 10 to 15 minutes to ask any questions. So that time we can utilize for question and answer. So this is what it is. And ladies and gentlemen, this training session will be roughly around 1 hour, and then we'll see how it goes. If you have more question and answer, I'll be happy to interact and contribute more time with everyone. So let's say this topic is very exciting for us. Why and how to follow our dreams. But my question is to everyone: do we dare to dream, or we just dream in the night? This is very much important. We should dare to dream, but it is not only important to dare only a dream, but we should take a right action at the right time. But what happens if we don't have a dream? If we don't have a dream, then how we are living our life? So it's a huge topic, but we have 1 hour, so we'll highlight a few things. I remember, and we all knows Mr. Doctor, Dr. Abdul Kalam, uh, who says, "Dream is not which you see while sleeping. Dream is not that which you see while you sleeping. It is something that does not let you sleep." मतलब सपने वो नहीं है कि जो आपको सोने नहीं देते, सपने वो नहीं है कि जो केवल सपनों में आते हैं और बस आप सुबह उठते हो और अपने दोस्तों को बोलते हो, रात को मैंने सपना देखा। बट वो सपना क्या था? And from where dream it comes, it is a complete neurological, the process which happens in our subconscious mind, conscious mind, which is a deep. So what is agenda today? We'll see what is dream today, why to follow a dream, and why it is important, to choose whether job or a career. And there are three steps principles to dream into achievable, which I follow in my life, which Mr. Lot of people follows. It is available on the YouTube also, which taught by Mr. Vivek Bindra. Accountability and ownership, 5 principles to get success, and smarter goals for a feedback. So these are the agenda what we're going to learn today. So I would like to request to everyone on the call to think about two questions in life today. Otherwise, this training session
will not be a fruitful. So first question you can write down. I have shared the presentations also. Do we really know what we want from our life? That means, what is the purpose of your life? Research shows more than 98% people in the world, they don't know what is their purpose in their life, what they want to do, what they want to do today, tomorrow, and in their life. If I don't have a dream, if I don't have a plan, then for what I'm living. So take 30 seconds to answer these questions to yourself. You don't share with me, with anyone, just for yourself. What is the purpose of my life? What is your ultimate dream? What you want to achieve in your life? What is your ultimate dream? What you want to be? So you as a student at the moment, maybe your short-term dream could be to just get the degree. Second would be to get a good placement, maybe at world, renowned organizations like maybe Hilton, Oberoi, Taj, or XYZ, and what? Maybe just to get a job, because just a job, because just a job will not solve your purpose. But yes, to make your dream come true, you need a job. Without job, you cannot make career. So both things are important. So please take 30 seconds. What is the purpose of your life and what is the ultimate dream? You have to write for yourself. You can write, short term goal, or short term your dream, or long term your goal or your dream. So now if you finish, we all think 1,000 things in a day. As research shows, we do think, on a daily basis. Every second we think about something. So every day, almost 55,000 thoughts comes in our mind. So from all this, from where it comes, we don't know. So it is more about what you dream, what you want to do in your life, what you want to achieve, and according to that, align yourself. A lot of people think 1,000 things. A lot of people, they say they wanted to do these, that, X, Y, Z. But end of the day, after 5 years, 10 years, 15 years, they said, no, I can't do it. I have not achieved it. So there is no time. Every time is a perfect time to achieve and dream what you want to do in your life. So believe yourself, because without believing in your dream, nothing is possible in your life. So we have to believe and believe. See, just remember, impossible is just a word. Actually, if you see, turn around, it's I am possible. So it's a think positive. Whatever dream you have, whatever dream, whatever dream you have to believe and you have to live within it, and you have to accept whatever situation comes. You have to stick to it, and according to that, you can modify your roadmap. But yes, if you think, it is not possible, then nobody can do anything for you, for you and in your life, because you yourself is saying to a people on yourself, it is not possible. Just imagine, अगर आपने ये सोचा है कि आप जहां पे भी आज बैठे हो, अगर 2 मिनट के लिए अगर ये सोचा है कि मैं जहां बैठा हूँ बैठी हूँ, मुझे यहाँ से उठना है, लेकिन मुझे उठना नहीं है, उठना है लेकिन उठना नहीं है, तो आप जिंदगी भर कभी भी वहां से उठ नहीं पाओगे. This is what is mind. So we have to train our mind in such a way, to achieve your goal, to achieve your dream in your life. You have to give positive strokes to your life, to your mind. So how you can give? You have to think positive. It is not about thinking only positive. No, positive thinking with positive action only can make your dream true. I repeat, positive thinking with positive action only can make your dream true. It is very proven statement. So yes, when we believe, we have to take action. Take action, I mean to say, we have to take a positive action with positive efforts and at the right time. Then yes, I am possible, I can say. It is not like, something होता है ना, हम सपने देखते हैं कि हम जब छोटे थे बचपन में, तो हम देखते थे कोई जादू का चिराग होता है, उसमें से एक अलाउद्दीन बाहर आता है और वो फिर आपकी जो चाहे इच्छा वो पूरी करता है. लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे असल लाइफ में ऐसा कभी भी नहीं होगा.
आपके सपने जो है वो रियलिस्टिक होने चाहिए, रियल होने चाहिए, ड्रामेस्टिक नहीं कि जिसमें केवल इल्यूजन हो। वो सपने आपको कभी भी हकीकत में नहीं बदल नहीं सकते। जैसे आज के डेट में अगर किसी ने चाहा कि नहीं मैं रातों रात अमीर बन जाऊंगा, ऐसा नहीं होता। यू हैव टू वर्क हार्ड, यू नो। तो आपको इस पे ध्यान देना है, यू नो। And now we talk about like, why do people must follow their dreams? ड्रीम्स को फॉलो करना क्यों जरूरी है? दो तरह के लोग होते हैं। एक अपना पेट भरने के लिए, ध्यान से सुनिएगा लेडीज एंड जेंटलमैन, अपना पेट भरने के लिए नौकरी करते हैं। और दूसरे वो लोग हैं जो अपना करियर करने के लिए नौकरी करते हैं। आपकी चॉइस है, आपको क्या करना है। आपको केवल रोटी कपड़ा और मकान के लिए नौकरी करना है, या आपको अपने सपने पूरे करने हैं? क्या करना है? क्वेश्चन इज टू यू, एंड यू हैव टू थिंक कि नहीं मुझे बहुत कुछ करना है मेरी जिंदगी में। करना है मतलब करना क्या है? वो जो करना क्या है, इसीलिए मैं अगेन आपको पूछ रहा हूँ कि प्लीज आई रिक्वेस्ट, डिफाइन टुडे व्हाट यू वांट टू डू इन योर लाइफ। व्हाट इज माय अल्टीमेट गोल? क्या मुझे केवल एक नौकरी चाहिए जिसमें मेरा घर चले, या मैं शादी कर सकूं, बच्चे पैदा कर सकूं और उनकी परवरिश कर सकूं, या मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे कुछ बड़ा बनना है? तो क्या बनना है? व्हाट इज योर अल्टीमेट गोल? टुडे इज द राइट टाइम लेडीज एंड जेंटलमैन टू डिफाइन। सो जो जॉब करते हैं उनकी बेसिक नीड होती है, बेसिक। जैसे फॉर एग्जांपल, somebody is working at construction site as a labor. What is his dream? His dream is what? Just to get a today's food and today's job so that he can survive. So he's fighting. His dream is to just to survive. पूरा जिंदगी निकल जाता है। और क्लोथिंग, मे बी ए शेल्टर, घर। आज भी हमारे इंडिया में इतने सारे लोग हैं या पूरी दुनिया में जिनका अपना खुद का घर नहीं है। और एक 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 बंदा हमारे इंडिया में ऐसा भी है, लाइक मिस्टर मुकेश अंबानी, ही हैज एंटिला which is a very costly house. Is why जो लोग झुग्गी या झोपड़ी में या नॉर्मल घर में रह रहे हैं, क्या उनका सपना नहीं है? उनका भी सपना है, याद रखिएगा, उनका भी सपना है। उनको भी रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए। और एक जो इंडस्ट्रियलिस्ट है या बिजनेसमैन, सो व्हाई, व्हाट यू वांट, दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग यू टुडे। अगर और वाकई ही अगर जिंदगी में ये भी कड़वा सच है, एक जिंदगी जीने के लिए एंटीला इतना बहुत बड़ा घर भी नहीं चाहिए। एक्चुअली आदमी जब मरता है तो 5.5 या 6.5 फीट का उसको जगह लगती है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। ना हम कुछ लेके आए थे, ना हम कुछ लेके जाएंगे। सवाल यह है कि आप क्या दुनिया को देके जा रहे हो। This is very important. What you are contributing to yourself, to your society, in your life. So what is your dream? What is your dream? Please, please think today. This is the right time to take your pen. Write down. Write down. Today is a perfect time. What is my dream? मेरी असली चाहत क्या है? क्योंकि जब तक ये असली चाहत नहीं होगी, तब तक ये ट्रेनिंग, ऐसे कितने भी सेमिनार हो जाए, ये सब फेल है। So think today. There is no other way other day. जब भी आप सोचोगे मुझे क्या बनना है, बनना क्या है मतलब, ये तो हो गया शॉर्ट टाइम कि मुझे कोर्स पास करके एक अच्छी नौकरी करना है। नौकरी करना है तो व्हाट इज योर अल्टीमेट ड्रीम? व्हाट यू वांट टू बी? डू यू वांट टू बी अ जनरल मैनेजर ऑफ अ होटल, or do you want to be a like a director of a hotel, or do you want to be a owner of a hotel? What you want? Think today. Today is a critical time in all colleges and every time. Because when we are doing college, for example, we are often confused that what in which department to make a career. So first year we don't know anything, about your liking, disliking, and on and on. So until unless you do not appear your industrial training or vocational training, you do not come to know what is a reality. सो कॉलेज हम ज्वाइन करते हैं जनरल मैनेजर बनने के लिए या अच्छा करियर बनाने के लिए, लेकिन जब हम ट्रेनिंग करते हैं या ट्रेनिंग के बाद जब आते हैं, तो कॉलेज में हम बोलते हैं नहीं यार, मेरा ये तो ड्रीम था कि मैं शेफ बनूं, लेकिन बहुत हार्ड लाइफ है। मैं ना हाउसकीपिंग कर लेता हूँ, मैं ना F&B सर्विस में कुछ
दूसरा कुछ कर लेता हूँ, या तो मुझे ये नहीं करना है, हाउसकीपिंग नहीं करना है, फ्रंट ऑफिस भी नहीं करना है, प्रोडक्शन भी नहीं करना है, तो मुझे करना क्या है? नहीं, मुझे एमबीए करना है, फिर मैं एचआर में जाऊंगा या तो फाइनेंस में जाऊंगा या तो मैं मार्केटिंग या सो ऑन एंड ऑन। सो डिसाइड टुडे। अगर एमबीए कर लिया और एमबीए करने के बाद अगर आप बैंक में काम कर रहे हो या किसी और सेक्टर में काम कर रहे हो, so today is a questions to all of you, ladies and gentlemen, why you are doing hotel management? Just to get a degree? No, this is the safest industry and the safest industry to make your career. It is not easy to get a job. It is easy to get a job anywhere in the world, but it is also we have a lot of opportunity to make your career and a lot of options, which hardly in any other industry we have options like what we have in hospitality industry. So what is your burning desire today? What you want to be? What you want to be? Tell yourself. Ask 1,000 times today what I want to be. What is my desire? होता क्या है actually? प्यास हमें लगती है. For example, if I'm thirsty, so I'm may generally we think that somebody could come and give us a glass of water. Or we may ask, maybe some of you can, are living in a house or maybe hostel. We may ask, can I have a glass of water? Sometimes people give you, sometimes they don't give you. But what we do not get up until we have a desire, that thirstiness inside. Then we get up and say, yeah, leave it. Let me take myself. So yaad rakhiyega, it's a small example in your life, but it's a big impact in our life. Because हमें अपने जिंदगी में अगर सपने हैं तो हमें खुद को मेहनत करना है, हमें अपने आप से चालू करना है और उन लोगों से जुड़ जाना है जो आपको आपके सपने पूरे करने के लिए हेल्प करेंगे। बट उसके लिए आपके पास सपने तो होने चाहिए, सपने होने चाहिए और सपने क्लियर होने चाहिए, डिफाइन होने चाहिए कि मुझे बनना क्या है, मुझे करना क्या है। जैसे आप अगर देखोगे माइकल फेल्प्स वाज एथलीट, who was a swimmer, आपने अगर उनकी लाइफ पढ़ी होगी, तो आपको समझ में आएगा। या कोई भी एथलीट अगर है, वो 5 सेकंड या 25 सेकंड के लिए 15 साल प्रैक्टिस करते हैं। जस्ट इमेजिन। या 10 साल प्रैक्टिस करते हैं, 5 साल प्रैक्टिस करते हैं, दिन में 14 14 घंटा। they are working very hard towards what? Towards their dream, towards their dream। एक बार में सपना देखा, थोड़ा सा मेहनत किया और अगर हम फेल हो गए तो हम उस चीज को छोड़ देते हैं। एक्चुअली वो सबसे बड़ी हमारी जिंदगी की गलती है। फिर आपके सपने कौन से है? गलतियां होगी, डिफिकल्टीज आएंगी, वो आना ही है। क्योंकि आप डायमंड ले लो, सोना ले लो या एनीथिंग यू टेक, वो उसमें उसमें शाइन तभी होती है जब वो घिसता है, जब वो तपता है। तो ये तो करना पड़ेगा, ये तो करना ही पड़ेगा। आपका जो सपना है वो डिफाइन करना है आज, तो ये मेहनत तो करना होगा। हम सपने देखते हैं, जैसे आप लोग पढ़ाई कर रहे हो आज की डेट में, हम लोग भी एक टाइम पे करते थे। कुछ लोग जैसे अटेंडेंस अगर कॉलेज की आप देखोगे तो 60 to 65 70% होगा, मैक्स टू मैक्स। 40% people what they're doing now, this is time to study, but what happens? We go for ODC, we bunk colleges, we just roam around in surroundings। और क्या होता है, फर्स्ट ईयर में सब नए नए होते हैं, everybody is like obedient students and we are sharing lot of thoughts and emotions and all sort of things। over a period we engage in other activities। so आपका पर्पस क्या है? what is your purpose now? get to study। over a period what happens? We dilute that dream and we think something else, in a short term how we can make money maybe, so please understand, this is your time for your study। if you increase and enhance your knowledge, then only you will be a success, because knowledge is a best tool to fight with anyone and anywhere। if you have a knowledge, you can actually try to perform the task, because if you don't have knowledge you cannot। and then ultimately what happens, I go to a lot of colleges and I've been to almost maximum IHMs to for HOT, MT and campus interviews। so think about today, where you want to be, what is your dream, what is your dream company, what is your dream role, what is that you want to give it to the society or contribute to the nation, what you want to do in your personal life
and professional life. Otherwise, दिन ऐसे ही जाएंगे. Like it's a very famous doha of Mr. Sant Kabir. कल करे सो आज करे सो अभी, और अभी करे सो मीन्स नाउ यू हैव टू डू इट. अगर ये दो लाइन अगर आपने अपने जिंदगी में, घर में या लैपटॉप में, मोबाइल में, कहीं पे भी ये एक हफ्ता देखो, इसको सोचो, इसके ऊपर आपको समझ में आएगा. आपको दुनिया में किसी भी ट्रेनिंग का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो अंदर से आवाज आती है. यस, मुझे करना है, मुझे उठना है. ड्रीम तो होते हैं, सपने तो है, सपने तो सबके है. बट होता क्या है, वी डू लॉट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन. आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, फिर हो जाएगा. और याद रखिएगा लेडीज एंड जेंटलमैन, जब 15-20 साल 25 साल निकल जाएंगे, या जो इन लोगों से मिलो जिनका एज 60-70 साल है, आज वो लास्ट एज पे है, what happens then? If you cannot achieve your dream, we curse to our fate. मेरे नसीब में ऐसा ही था. याद रखिएगा, नसीब हमारे हाथ में है. हम आज बन सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, अगर आपने सोचा तो. मुझे सोच के कोई फायदा नहीं है, सोचना आपको है, क्योंकि सक्सेस आपको पाना है. बनना क्या है वो आपको देखना है. आज ये सही टाइम है लॉकडाउन का, कि आपके पास बहुत सारा टाइम है. You have plenty time to think what you want to do, and with how you want to be, with whom you like to be. You can read autobiographies of great people who are successful people you can talk about Mr. Swami Vivekananda, Dr. APJ Abdul Kalam, Milkha Singh, anybody. But these are the great people. And all these people were ordinary people, but they have done extraordinary, work for the nation and for the globe. So what? That's how it is. सपने क्या होते हैं देखो, Mr. Wright, you might have heard the Wright brothers, the story, the first men who fly. जब उन्होंने ये लोगों को बोला कि अरे एक उड़ता हुआ आदमी कैसा लगेगा, आदमी भी उड़ सकता है. So people were laughing at him. People were laughing at both of them. But what happened? They did not care about anybody. They only care about their dream. They only care about dream. And because of their dream, today you can fly. Because now we have aircraft. So think about it. Doesn't matter. Similarly, like, Mr. Henry Ford. Think about it. How many times people have failed? But they success. They got the success. Like Mr. Edison, sorry, he fails 5,000 times in his life. Can you believe, ladies and gentlemen? 5,000 times in his life, people were laughing at him, and many more people in life who failed, but he was stick to his dream. So people were asking him, telling him, boss, you have failed 5,000 times in life, you cannot do anything. But he said, at least I know now 5,000 times ways to fail, and ultimately now we know what Mr. Edison has done. So similarly, yes, when you dream, there will be a time where people will criticize. Accept the criticism, accept the failure, realign your goal, then only you will be success. एक दो बार या तीन बार, if you are trying to achieve or attain something, and if you got failed, leave it, no problem. No, you have to stick to it, and you have to bounce back with double power. Please understand, ladies and gentlemen, this is a time, and we all are youngsters. We have a lot of time today, and a lot of things available for all of us. So what happens today if you don't have if somebody, for example, sorry, don't have a dream? So Mr. Vivek Bindra said there are 3 steps to define your dream. Please understand, define your dream. Today, jot down your dreams, your aims, what you want to do in your life. And you ask yourself, what is that dream which I had seen in my past life, but yet I have not achieved? So review and revive your dream, and remind again and again in a day, and then precisely define your dream with clarity, that exactly what I want. And then visualize yourself, imagine yourself, what I want to be, मेरी असली चाहत क्या है, मुझे क्या बनना है. If you visualize,
Please understand, ladies and gentlemen, there is a law of attraction. Law of attraction says whatever you think, whatever you visualize, and whatever you attract, it will attract towards you. Today, a lot of people are worrying about what, because of this, corona 19 epidemic. Entire world is suffering. Everybody is fearing that I may lose a job, I may not have maybe a fund, maybe how I can survive, so many things. But why we are only attracting a negative thoughts? This is a time where you as a student can spend your time to clarify your dreams, imagine what you want to be, and then build your roadmaps, pathways to achieve it. You have to build your roadmap. How I can achieve, who can help me to achieve, what are the ways of doing it. So for your dream, you can write three potential difficulties. First you have to write, for example, if I want to be like a GM after 10 years, so what is a difficulty, that you need to write today. Yes, you can be a general manager of a hotel in 5 years time also, in 10 years time also, in 15 years time also, and 50 years time also, and at the age of 55 also. There is no limit. But when you want to be, so what is difficulties for you, that you need to jot down. Then three potential possibilities. What are the possibilities to be a general manager, for example, or whatever you want to be? Or maybe for example, if you want to buy a bike, so what are the three potential difficulties? First is fund. Second, because you may not have a fund, so I have to ask my parents. If they have, I will get it. Third, maybe this is for example, now is lockdown, everything is closed down, I cannot buy, so like that. And what are the potential possibilities? Yes, I can borrow fund to buy a motorcycle, to buy a motorcycle, or I can take motorcycle for my friends, XYZ. So but you should have a motorcycle, that if you're thinking today. So please understand. Then list down your five immediate actionable, what action you want to take. Number one, for example, you have to plan. You need to talk to your parents at the right time, at the right moment. And you, like that, you need to list down your five immediate actionables, and then list down three names to support you at this time, in your life. You can list down, for example, your name of your college director, your name of your professor, maybe your mentor, maybe your parents, maybe your well wishers, somebody, maybe your friend who will support you to make your dream come true. And then review your plan in 7 days. Every 7 days you should have a plan, and every night you should review your plan, how much I've achieved and what I need to do tomorrow. Otherwise, it will be a very, very, very difficult. Please understand. If you're sleeping, I mean, dreams. जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने बात किया कि यह सपने वो होते हैं जो आपको सोने ना दे. तो yes, सोने. I mean, you should not sleep. That does not mean you should not sleep in the night. Please understand. You should sleep. You should follow your minimum. You should sleep 8 hours, and 8 hours you should contribute to your honest hard work or honest your profession, whatever you do. And 8 hours you should contribute, like for your hobbies, your with your social networks, your health, your hygiene, and whatever religion, wherever you are, sometimes you need to spend for your prayer. So these are the 8 plus 8 plus 8 formula to follow your time management while you're dreaming. Only dreaming is not the solution. To make it true, that is a journey. And trust me, the moment you fail even 10 times, that's okay. But this is also a memorable journey. ऐसा कोई बंदा नहीं है दुनिया में जो फेल नहीं हुआ, जस्ट सक्सेस हुआ. ऐसा नहीं हो सकता. यू नो और जो लोग फेल होते हैं वही सक्सेस होते हैं. बस आपको अपना सपना छोड़ना नहीं है, उसको पकड़ के रखना है. प्लीज अंडरस्टैंड. और उसको देखना है, सोते टाइम नहीं, खुली आंखों से देखना है. सो ये बेसिक है, जिसमें आपको आपका सपना जो है उसको अगर नहीं है तो आज डिफाइन करना है, रिमाइंड करना है. रिमाइंड
I'm remind 1,000 times today. What is my dream? What I had wanted to do. What I want to do. मुझे क्या करना था जो छूट गया, जो भी करना है कैसे करना है, कब करना है, क्या क्लैरिटी है. क्लैरिटी मतलब sit down at a nice, place, ask your mind how I want to be. आप खुली आंखों से पूछ सकते हैं, आंखें बंद करके भी पूछ सकते हैं अपने आप से, किसी और को पूछने की जरूरत नहीं है. क्योंकि आज के डेट पे होता क्या है, एज अ स्टूडेंट लाइफ, when you are there as a student, we are we are asking so many people, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कहाँ स्पेशलाइजेशन करना चाहिए, कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा है. तो वो उसके जो सपने होते हैं सामने वाले के, वो आपको बेचता है. यानी कि he is telling you this is right, you go here, you go there, but no, what is your asli chahat today, what is your dream today, stick to it guys, and this is a plan, this plan will definitely help you. Now remember ladies and gentlemen, what motivate people and make them stay at focus, बहुत जरूरी है. What motivate people and makes them stay at focus, there are basic things when you're working. This is for professional what I'm talking about. What motivates people at work? Many of you have gone to hotels to do your industrial training. Somebody, many people might have happy at their workplace wherever they are, and some people they might have called, the colleges, the college professor or director saying that, ma'am, this is not the right place to do a training. A lot of people are, a lot of hours we need to work, yet people are not treating well. I'm quitting my training, I'm come back, so on and so forth. All the story we know. So this is eye opener for everyone. So now just see, when you join at the first year, maybe second year, maybe third year, or before joining, you wanted to be maybe a chef, maybe as a manager, or maybe as a hotel a professional individual. But what happens during training and after training, and what happens post, pass out? So think over it, because wherever you do your training, that matters in your life. क्योंकि वो ट्रेनिंग एक ऐसा जरिया है आपके जीवन में, जहां से आप सपने देखना चालू करते हो, या तो जो सपने आपने देखे हैं कॉलेज टाइम में, उसको पूरा करने का या उसको एनालाइज करने का एक मौका आपको मिलता है. सो प्लीज अंडरस्टैंड, आपका जो ट्रेनिंग जहां पे भी है, इट इज नॉट योर लाइफ, इट इज जस्ट फॉर. व्हाट इज ट्रेनिंग? बेसिकली ट्रेनिंग इज टू जस्ट टू get familiar with the hotel industry, to familiar with the departments. But a lot of people they say, sir, ये करने के लिए मैंने होटल मैनेजमेंट नहीं किया है, मुझे शेफ बनना है, मुझे मैनेजर बनना है, so on and on. But without working for that particular time, how you can be a manager? You cannot be a manager. You are bunking. For example, somebody is bunking, the colleges, somebody is bunking, the training. Then how you will achieve your dream? I'm not asking, and I'm not talking about those people who has already hotel and who are the owner of hotel. Being owner of a hotel is a different story, because they already have a hotel. It is about a people who want to, be something in their life. So what happens at workplace? Remember your training day. If you like housekeeping, for example, and training manager, if he or she has placed you in housekeeping, you like that department. For example, if you like production, and if you're there, if you like your skill, then you like that department. But if you don't like production, or if you like production, if we deploy you in F&B service, that too in banquets, then what happens? 13 hours, 12 hours minimum is the shift, and it's a hard work. We are not willing to do it. Maybe somebody is working like 18 hours, 15 hours now days also in the hotels. It's not that it is not happening. It is happening. Then what happens? We lose our interest. Now go back to your dream again. What was your dream, and what you're doing now? So if you don't, if you don't get a dream job, you don't like the job. Remember today. Similarly, in your college, if you don't like a professor, you don't like a subject. If you don't like a subject, you don't like a professor. But ultimately, you don't have a choice, because you have to pass the degree. Similarly, to make your dream come true, ladies and gentlemen, it is your choice. So define today
in which company you want to work. Do you want to just work and just do a job for your survival? Then you can join anywhere. But if you want to pursue your career, then I would recommend everyone to join a great company. Great company means those company who are a part of a great place to work, who has a certification. So where you will grow and you can make your dream come true. That means that means it doesn't matter, or it is not a mean that if you join a company which is not a great place to work. No, there also you can make your dream come true, but yes, it may take some time because you never know the situation. It is, it is all about the situation. So what I'm trying to say today, ladies and gentlemen, please understand, खाली सपने देखने से नहीं होता है. You have to motivate and inspire yourself. You have to inspire yourself and you live in your dream. So you have to get a dream job. Why I'm telling you? So you will like your work. And याद रखिएगा, जब भी हम काम करते हैं, काम की जगह पे दो चीजें इंपॉर्टेंट है. एक, आपका पसंद का काम मिले तो आपको अच्छा लगता है. दूसरा, अगर आपको आपका मैनेजर अच्छा लगता है, सुपरवाइजर अच्छा लगता है, टीम लीडर अच्छा लगता है, who cares you, who loves you, who guides you, who coach you, who is doing mentoring for you, then आपको लगता है कि नहीं, मैंने जो सपना देखा है शायद वो पूरा हो सकता है, और यही बंदा है या यही बंदी है जो मुझे हेल्प करेगा. yes, I have to respect, and that's how respect, आप अर्न करते हो या आप लोगों को देते हो. लेकिन इमेजिन योर ट्रेनिंग का टाइम, अगर कोई फॉर एग्जाम्पल गाली देके आपको बुलाता है, होता है समटाइम्स होटल्स में, ऐसा नहीं कि नहीं होता है. या कोई आपको जबरदस्ती रूप बोलता है, नहीं, यू वर्क, this is a right, I will screw your career. Ladies and gentlemen, nobody can screw your career, nobody can insult you until unless you give permissions. Yes, but whichever company you join, or wherever you are going to do a training or you have done training, please understand and adhere their code of conduct and policy, because this is one step. जब तक आप पहली सीढ़ी नहीं चढ़ोगे, आप ऊपर तक नहीं चढ़ सकते हो. आप किसी भी जगह पे चले जाओ. फॉर एग्जाम्पल, इफ लाइक मंदिर में जाना है तो पहली सीढ़ी चढ़ना है, तभी तुम भगवान के पास जाएगा. एनीवेयर, दिस इज जस्ट नथिंग इज रिलीजियस गाइस, जस्ट एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू. घर में भी अगर सीढ़ियां होती है, जब तक हम स्टेप नहीं चढ़ेंगे तब तक हम घर में नहीं दाखिल होंगे. हम सीधा जंप नहीं कर सकते, और डायरेक्ट जंप करने वाले लोग जिंदगी में सक्सेस भी नहीं पाते, क्योंकि आप घिस घिस के अगर बनते हो तो आपको हर एक स्टेज का जो है ना एग्जाम्पल होता है, अनुभव आता है. फॉर एग्जाम्पल, द पीपल who are going for Mount Everest, what they do, they're at the stages. It's a very difficult time to climb Mount Everest. No, it's not easy. We require a lot of, but why they do it? Because they have a passion for it, they have dream for it, and they like what they do. They remember, I repeat, they like what they do. That's why they are doing it. And they like, that's why they go there, they enroll themselves and they enjoy. Similarly, in work, what happens is a manager, it's a company, it's an organization, maybe it's a college. Remember, today, your college has given you opportunity. Why? Because they should, about this seminar, or maybe many more speakers, they might have spoken with you, and way forward they will be interacting with you. Why? To motivate you. See how much efforts college is taking for all of you guys. Please understand today, it's a huge work. It's not a small thing. However, college is trying to help you, your dream come true. So understand today that you should enjoy your work, then it motivates. You should enjoy your study now, then you will feel confident. And when you learn, you feel confident, you feel motivated, and that's how you will get growth. हर दिन आप जिंदगी में सोच लीजिएगा, you have to add value to your life and somebody's life. The moment you think this way, your dream will come definitely true. You have to add value to your dream also, to yourself also, and people also. And you have to respect to the people. When you respect to the people, सब सही होता है. Because understand, सपने बहुत है, सब कुछ करना है, लेकिन क्या होता है, हम भूल जाते हैं कभी कभी कि लोगों को रिस्पेक्ट करना. It is not a matter of what title you have. It is not a matter of, from which background you are. It is a matter of
how you're interacting with people. जब आप सपने देखोगे तो आपको लोगों के साथ काम करना पड़ेगा, लोगों को लेके काम करना पड़ेगा। आप किस तरह से करते हो वो आपकी जिम्मेदारी है दोस्तों, उसे ध्यान से सुनना कभी भी। ईगो जो है उसे अपनी जिंदगी से निकाल के फेंक दो, कुछ नहीं होता है, ये जस्ट वर्ड है। क्या है ईगो? जस्ट अ वर्ड। सो प्लीज अंडरस्टैंड हाउ डू वी इंश्योर, how do we ensure we are following our dreams? हम कैसे कर सकते हैं? So it will define, like in organizations we do define who is motivated, who is not motivated, who is inspired, and how much you know आप आपके सपने हैं और आपका सपना है, ये हमें पता चलता है आपकी प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस से। हाउ यू आर एंगेजिंग योरसेल्फ एट वर्क प्लेस, हाउ यू आर एंगेजिंग योरसेल्फ एट स्टडी, like in your college, your professor and the college management comes to know after your results that how you're engaging. Sometimes what happens in industry, the people who are sitting at the back benches, they are the leaders now in the industry, and the people who comes like top 5, top 10, hardly people you'll find in the industry. So that is also a result. That does not mean the person, that person who is coming, in college top 5, that doesn't mean he's a clever. No, this is academics, ladies and gentlemen. Yes, this is academic. Real picture, real story will start the moment you join the industry, and the way you are living your dream. So your productivity matters because your performance. Otherwise, it will be just like what we have a dream, but we are just saying and we are not taking actions. So yes, stay happy and stay focused and feel proud for your dream, but don't be a egoistic. No, you don't have to be egoistic. You have to be happy about it, and you have to be happy whatever you have today. And you have, but that does not mean you should not dream for a big. No, you should think big, but you should be happy today also what you have, and you have to try and attain what you want to be, and stay focused. Then self-discipline. Without self-discipline, you cannot make your dream true. No. Like for example, people, like if there is a meeting, people start coming late. If you ask 5 minutes, 10 minutes before, what they'll say, sir, it's Indian standard time, we come late. No, you tell yourself, I will follow time in my life. Otherwise, याद रखिएगा, बहुत सही कहा है किसी ने, आज अगर आप टाइम की कदर करते हो तो टाइम आपकी कदर करेगा, नहीं तो एक दिन ये टाइम आपके हाथ में नहीं मिलेगा. सो टाइम इज किलिंग. हर दिन निकलता है, एक सबसे अमीर आदमी को और सबसे गरीब आदमी को दिन जब निकलता है दोस्तों, तो 24 घंटे मिलते हैं उसको, सबको 24 घंटे मिलते हैं. उसको आप किस तरह से यूटिलाइज करते हो, ये आपका रिजल्ट है. ये आपके जो सपने आप 24 घंटे में कैसे उसको पूरे करने के लिए खर्चा करते हो, दैट इज व्हाट इम्पोर्टेंट. हाउ यू आर स्पेंडिंग योर 24 आवर्स. आर यू स्पेंडिंग योर 24 hours to make your dream true, or are you spending your 24 hours for what? Just sleeping or just dreaming, or wasting your time in front of maybe a gadgets and watching all unproductive tasks? No. Or unproductive, the drama, whatever it is. No, please stick to it and take interest in yourself and take interest in your dream. Then definitely it will help. Now, how to take interest? Sir, it is so impossible. No, as I said, it is just a word. If you take interest in you and in your dream, definitely it will help you to make it happen. Because when you have a knowledge, you have a confidence. When you don't have a knowledge, you don't have confidence. And when you're, as I said, define today what you want to do in your life. Once you define the purpose of your life, you will have confidence because there will be a clarity. Without clarity in your dream, you cannot make true. You cannot make true. Now it's ability of what? Just to see a dream, whatever dream you have, and just working in day-to-day life, it will not help, guys. You'll have to take some training. You have to sharpen your saw. That means you have to upgrade yourself, upscale yourself in terms of knowledge, skills, and attitude. It doesn't matter whether it is professional or whether it is personal. So you have to take a training, whether it is online training, on-job training, whatever it is. And you have to reward yourself also. Whatever you have done to achieve your dream, it doesn't matter whether
doesn't matter even if it is a smallest thing. You say yourself, good job. That's a self motivation. You should not wait people to say, good job. Yeah, that's additional, the wow factor for you, and it makes sense and matter also. So we are all have to, you know appreciate people in public, and reprimand in private. Please understand. And understanding your dream, that what is my dream and what is a way forward, what is a roadmap, and how much I have achieved today, and when I want to achieve it, and whether it is realistic or whether it is not realistic, you have to think. And to make your dream come true, as I said, define 3 people who can help you, so that they can share their experiences with you, and you can gain their experiences, their guidance, and together, you know, you can achieve your dream. So, yes, it is important. Now, 5 principles. Please understand. 5 principles to achieve your dream. Without determination, willpower, and desire, nothing will happen. I repeat, determination. Without determination, कुछ नहीं होता. कुछ भी नहीं होता जिंदगी में. हम तो थोड़ा सा प्रयास करते हैं, फिर हम छोड़ देते हैं. उससे कुछ नहीं होना. हमें पूरी पूरी इच्छा से, पूरी शक्ति से हर दिन लगना है. हर दिन करना है. Because we never know. Today we have, tomorrow we don't know what situation will come in our life. But you should stick to your dream. Hard work. Without hard work, nothing is achievable in your life. But yet in today's world, with hard work, you should learn the smart work also, and you should respect people. सपने बहुत है, लेकिन हमें लोगों को रिस्पेक्ट देना नहीं आता है. I mean, we don't know how to speak with people. कोई फायदा नहीं है. आपके जिंदगी में कोई फायदा नहीं है. People will respect you just for your designation. And designation and authority is what? Only for 9 hours or 10 hours, until we have, the hotel uniform. After that, we are just a human. Just a human. Ladies and gentlemen, we are just a human. Just human. और कुछ नहीं है. जब आए थे तभी भी कुछ नहीं था, जाएंगे तभी भी हमारे पास कुछ नहीं रहेगा. So yes, जो सपने आपके हैं, वो सपने, और उन सपनों में आपने क्या आज बोया है और उसको किस तरह से आप साकार करोगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. सो हार्ड वर्क एंड रिस्पेक्ट पीपल. ओनरशिप एंड अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है. ओनरशिप एंड अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि वो जब तक नहीं होगा तब तक सपने नहीं आएंगे. आपको अपने सपनों को खुद को खरीदना है. खुद को खरीदना है माने कि खुद उसका ओनर बनना है. डिवोशन एंड पेशेंस. विदाउट डिवोशन कुछ नहीं होता. डिटर्मिनेशन है, विल पावर है, devotion and passion. Devotion, that doesn't mean we have to work 18 hours or 20 hours in a day. No, it is not like that. You have to work only 9 hours, 10 hours, whatever. किसी ने बहुत सही कहा है, अगर आप अपना काम अपने सही टाइम पे अगर नहीं कर सकते हो, तो आप कॉम्पिटेंट नहीं हो. तो आपने सपने अगर पूरे करने हैं आज, कुछ भी छूटा होगा, सिंगिंग, डांसिंग, व्हाटएवर, ये 20 घंटा काम करके आप जनरल मैनेजर नहीं बन सकते हो. आप बनोगे, बन सकते हो, बनना भी चाहिए, लेकिन आप एक फ्रस्ट्रेटेड जनरल मैनेजर बनोगे, क्योंकि आपकी जिंदगी में बहुत कुछ छूट गया होगा. ऐसा नहीं करना है. आपको आपकी लाइफ में वर्क लाइफ बैलेंस करना है. इसीलिए बोल रहा हूँ, डिवोशन. आपके लिए फैमिली भी इंपॉर्टेंट है, आपके लिए काम भी इंपॉर्टेंट है, आपके लिए सोशल गैदरिंग्स भी इंपॉर्टेंट है, आपके लिए हर चीज. ये जो पिलर्स है हमारी जिंदगी के, और कुछ प्रेयर्स या जो भी आप करते हो, खुद की शांति भी बहुत जरूरी है. बिकॉज रिमेंबर, यू कैन ओनली अचीव योर ड्रीम व्हेन योर माइंड इज, माइंड हैव अ पीस. चिल्लाना, चीखना, टेंशन लेके, एंजाइटी लेके, फियर लेके आप अपने सपने को पूरा नहीं कर सकते हो. एंड इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट. प्लीज अंडरस्टैंड, इट्स वेरी वेल सेड. आज अगर आपके सपने को, जो भी सपना आपने देखना है, जो देखा है, जैसे मैंने अभी बोला कि कुछ सपने, जिसके सपने ही नहीं होंगे, वो आज इस तरह से सपने को डिफाइन कर सकता है, क्लैरिटी ला सकता है. उसके साथ अगर आपने ये आज नहीं किया, तो ये कल कभी नहीं आएगा दोस्तों. आज करना है, मतलब आज करना है. इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट. अर्जेंट और इम्पोर्टेंट क्या है आपके लिए, उस सपने को पूरे करने के लिए, वो करना है. अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट, नॉट अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट. यस, ये आपको करना है सेकेंड फेज में. नॉट अर्जेंट, नॉट इम्पोर्टेंट चीजें आपको जिंदगी में नहीं करना है. वो चीजें हो सकता है, जस्ट हैंगिंग अराउंड इन फ्रंट ऑफ द कॉलेज, जस्ट स्पेंडिंग टाइम, बंकिंग लेक्चर्स, हैंगिंग अराउंड. इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमने भी कॉलेज किया है. एवरीबडी हैज डन. बट व्हाट इज आउटपुट टुडे? नहीं. अगर मैं एक लेक्चर में अटेंड करता हूँ तो मुझे कुछ नॉलेज मिलेगा.
it will you will get some idea, और आपका थोड़ा सा मेहनत कम होगा पढ़ाई करने में. So this is your age जहाँ पे आपको पढ़ाई करना है. सही पढ़ाई करोगे तो पूरी जिंदगी पड़ी है दोस्तों पैसा कमाने के लिए. लेकिन आज अगर पढ़ाई छोड़ के पैसा कमाओगे, बाकी चीजों में ध्यान लगाओगे तो मुश्किल है. आई अंडरस्टैंड दिस इज वेरी डिफिकल्ट एज. We contribute a lot of time in other activities. होता है, we get attracted towards people. Lot of thing happens in life, and then we screw ourselves. So why it happens? Why I'm telling you this? जो सपने आपने देखे हैं उसके लिए सही हैबिट को अपने जिंदगी में लाना जरूरी है. हैबिट, yes. So you can read books, 7 habits, highly effective people. You can watch videos on YouTube. It's very good. So you have to be proactive. In your life, you have to get aware in your life. That's what it is today. What you want to do in your life, win-win. So you can go through it. Today we don't have that much time. Maybe some other day, but you can go through and use refer. But this is a time today. कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी, अब आज ही करना है. नहीं तो ये टाइम ऐसे ही निकल जाएगा. फिर एक बार टाइम निकल गया तो वो वापस कभी नहीं आएगा. गया. हर एक सेकंड आपका 24 घंटे में से खर्च हो जाता है हर एक टाइम में. आप किस तरह से उसको ये कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट है. सेकंड होता है लाइक अकाउंटेबिलिटी. अकाउंटेबिलिटी मीन्स इज इंडिविजुअल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्शंस. आप अपने जिंदगी में अपने सपने को पूरा करने के लिए खुद जिम्मेदार है, कोई और नहीं. प्लीज डोंट ब्लेम एनीवन. प्लीज लर्न टुडे, ब्लेम योरसेल्फ whatever is happening in your life. If you're doing good, appreciate yourself. If you're not doing good, analyze today why it is not happening in my life, why I'm not achievable, why I have not achieved my dream, why and why I want to make career, where I want to make career. Think today. Think and take a responsibility. Responsibility means it's your own actions. You are answerable to yourself. Accountability means individuals are responsible for their actions. That means yes, आप खुद जिम्मेदार है. Ownership means it's the attitude of accepting responsibilities for something and taking control of how it develops. That means आपको अपना एटीट्यूड मतलब यानी कि आपका दिमाग, आपका माइंड इस तरह से डेवलप करना है कि जो सपने आपने देखे हैं उसको पूरा दिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके पॉजिटिव स्ट्रोक देते रहो और पॉजिटिव एक्शन उसके साथ लेते रहो. वही आदमी सक्सेस हो सकता है. वही आदमी अपने सपने को पूरा कर सकता है जो पॉजिटिव थिंकिंग के साथ पॉजिटिव एक्शन ले सकता है. नहीं तो पॉजिटिव सारे थिंकिंग करते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते हैं तो क्या होता है, नसीब नहीं, ये नहीं करना है, इसे नहीं करना है. प्लीज अंडरस्टैंड. और ये करते टाइम जैसे मैंने बोला है आपको फीडबैक देना होगा. या तो कुछ लोग आपके जो मेंटर आपने डिफाइन आज करने वाले हैं 3 लोग, वो आपको फीडबैक देंगे. तो इंटरैक्टिव एंड डॉक्यूमेंटेड ये जो फीडबैक होता है वो कैसे देना है. सो वन मोर टूल आई एम गिविंग यू टुडे. इट्स स्मार्टर. SMARTER. It's a smart and smarter. You have to be a smarter enough today to make your dream true. So while you're defining your dream or anything into your life, you should be very specific in your life. What I want to do with a full of clarity, and your dream should be measurable. That's what I'm saying today. You measure your dream, how much you have achieved, and how much is left to achieve, and till what you want to achieve. And you have to make a roadmap. Roadmap means how you will achieve. अगर plan A सक्सेस नहीं हुआ तो what is my plan B, what is my plan C, what is my plan D. बट फोकस को आपके ड्रीम को छोड़ना नहीं है. प्लान मॉडिफाई करना है, ड्रीम मॉडिफाई नहीं करना है. रिमेंबर, जो भी ड्रीम आप आज डिफाइन करोगे सॉरी आपने डिफाइन किया होगा, you have to be attainable, achievable and yes ambitious also. ओवर एम्बिशियस नहीं होना चाहिए. ओवर एम्बिशियस मीन्स आप जस्ट अपने है बस बनना है बड़ा बट करना कुछ नहीं है, ऐसा नहीं होता. एम्बिशियस होना जरूरी है, उसके लिए एक्शन लेना बहुत जरूरी है. रियलिस्टिक, अगेन आई एम टेलिंग यू, सपने हकीकत में उतारने के लिए आज के डेट में वाकई ये डिफाइन आपको करना होगा कि यस मुझे जो सपना देखे, जो मुझे देखा है मैंने, वो रियल है. उसको रियल करने के लिए रियलिस्टिक आपको आज की खुद की सिचुएशन एनालाइज करनी होगी. सॉरी, वो आपकी हर एक की सिचुएशन आज के डेट में अलग अलग होगी. आज जैसे टुडे एंटायर वर्ल्ड इज सफरिंग विद कोविड-19.
this what is happening, सबकी सिचुएशन अलग है. रियलिटी आज के डेट में ये है कि वी डोंट नो व्हाट विल हैपन टुमारो इन इंडस्ट्री. आवर इंडस्ट्री इज सफरिंग अ ह्यूज, people are on leave, people are, organizations are cutting manpower, so on and on. But this doesn't mean that it will be forever in our life. No, this is just a matter of time. So आप जब जैसे आप सपने देखोगे, इस तरह की आपदा, इस तरह की सिचुएशन आपके इसमें आ सकती है. बस आपको आपका रोड मैप मॉडिफाई करना है, गोल मॉडिफाई नहीं करना है. इसका मतलब ये नहीं कि कल से होटल नहीं खुलेगी, होटलें जरूर खुलेगी. We will definitely work and we will come back. That's what it is. Similarly, your college will open, your lectures will start, and everything you can do again and again. Yes, and time bound. This stands for time bound. till when you want to achieve. Sorry, and extending. Like this is what the coronavirus is, suffering in the entire world. So whatever, like for example, we were having, short-term goal or quarter-wise goal. We have what? We have extended that. So now we have to extend also. You have to extend, but till what? That you have to define, and you have to reward yourself and reward people in your life. Next is about a feedback. When you talk about a feedback, yes, you always, as I said, always will give your feedback. Always you will take feedback. Whosoever is giving you feedback in your life, ladies and gentlemen, take it positively always. Doesn't matter whether people are giving you criticism or whatever it is. Remember today, feedback is feedback. So how to give a feedback? So there is a star model which you can Google it. You will find out on Google also, and in YouTube also. There are a lot of various models of star. So is a situation. Situation will define whether because every day you will have a situation when you have a dream, and when you want to make a career, every day you will have a situation. When you want to do a job, there is not a big situation, because job is what? Just to survival. Just to survive in your life, you will do a job. But when you want to make a career, yes, you will, to make a career, ladies and gentlemen, you should be passionate about it. Because when you have a passion, you're passionate about your dreams, then only you can work on it. You have a dream, but you don't have a passion. No, it will not work out. It will not work out. And nobody can help you also. So again, I'm asking you today and telling you today, define what is your dream, what is your real, chahat in your life, what you want to do in your life. And get ready when you want to work, anywhere. Now, when you perceive your dreams, there will be a situation, maybe a good situation for you, or maybe a worse situation for you, because we never know. But how to handle a situation, it matters. Because remember, you have to make your dream come true. So you have to handle situation wisely. You cannot be aggressive, and behind people saying that no, you handle situation if you can. If you cannot, be quiet at that moment. Focus on your task, whatever task you have. Because of task, you will get a situation, or because of situation, you will get task in your life. So how to define a task? So align those tasks with your dream. Align your all tasks with your dream. Please, again, I'm telling you, according to that, you have to take a positive action in your life. If you take a positive action in your life, definitely there will be some result, whether it is positive, whether it is negative. Yes, stick to it, you will get the positive result. And at the last but not the least, Mr. Michael said, Michael never said it is impossible. He always said, let me think, how can I make it possible? So ladies and gentlemen, please understand, we all can think. We all can think whatever you can, and you can achieve whatever you can achieve if you think. Please understand. He always says, let me think, how can I make it possible? So if you say, yes, I can, like, what do you do in early morning when you woke up? जब हम सुबह उठते हैं तो करते क्या है? उठने से पहले सुबह उठते ही हम पहले मोबाइल हाथ में लेते हैं. This is a absolutely, ladies and gentlemen, is not right way to get up at early morning. No, you should. And जब हम सोते हैं तो क्या करते हैं रात को? हम टीवी देखते हैं, मोबाइल पे चैटिंग करते हैं, मे बी सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड करते हैं, whatever you do, and we sleep. So no, आज दो चीजें करनी है. अगर आपको अपने सपने को पूरा करना है तो आपको रात को सोते टाइम ये आपको डिफाइन करना है,
और रिव्यू करना है जो मेरा सपना है उसको पूरा करने के लिए मैंने आज क्या किया, और मुझे कितने ऐसे टास्क जो बाकी है जो मैं कल करना चाहता हूँ। और कल का आपका प्लानिंग आपको करना है कि कल मुझे ABCD करना है। उसी तरह से आपको पूरे हफ्ते का प्लानिंग करना है, 15 दिन का प्लानिंग करना है, 1 महीने का कर सकते हो, 1 क्वार्टर का कर सकते हो, 1 साल का कर सकते हो, 10 साल का कर सकते हो, पूरे जिंदगी का कर सकते हो। चॉइस आपकी है कि आपको करना क्या है। तो सुबह जब उठते हो तो जो रात को जो आपने अपने दिमाग को बोला है, माइंड को बोला है कि मुझे ये करना है, आई वांट टू डू दिस, आप सुबह उठेंगे तो वही से उठेंगे और आपका फोकस पूरा दिन वहां रहेगा। See, this is what the mind, the way you train your mind, mind will work accordingly. So, हम जिस थॉट्स को अपनी लाइफ में कल्टीवेट करेंगे वही आपके ड्रीम को जो है पूरा करने के लिए हेल्प करेगा, आपका जिंदगी आसान बनाएगा। प्लीज अंडरस्टैंड। और दिन में 2-3 बार अपने आप को बोलो, मेरा सपना ये है मेरा सपना, मुझे ये करना है, ये है मेरा सपना, मुझे ये करना है। एंड देन यू सी, वो सपना पूरे होते हुए आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। होगा, किसी को मतलब थोड़ा टाइम भी लग सकता है, बट आप आज नहीं तो कल वो सपने को पूरा करेंगे, पक्का करेंगे। तो चॉइस आपकी, आपको क्या करना है, जॉब करना है या करियर करना है। करियर करना है दोस्तों, तो गेट रेडी। थोड़ा डिफिकल्ट टाइम भी आएगा, बट गेट हैंडल इट, मैनेज इट एंड लिव विथ इट। थोड़ा सा डिफिकल्ट एंड अगर सब करियर करना है तो आपको और एक चीज करना पड़ेगा, आपके कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। कोई भी चैंपियन देख लो, वो हर दिन मेहनत करता है, वो हर दिन प्रैक्टिस करता है और वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आता है। हर दिन अपने आप को चैलेंज करता है कि यस मुझे ये करना है। यू नो you can take watch like movies who's like Bhag Milkha Bhag, like Milkha Singh, whatever what you see, you will get a lot of inspiration. Do not watch those drama, where you will get a negative stroke. Watch positive, because there is a negative time in the entire world, so you have to think about a positive and positive things to make your dream come true. Please understand guys, this is very easy techniques. रात को सोते टाइम मैंने क्या किया है, मुझे क्या करना है और मेरा कल का प्लानिंग क्या है, stick to it and follow the schedule. Don't waste your time here and there. If you waste time, because वो 24 hours what we have today, we will have tomorrow also, but tomorrow we will not get today's 24 hours. No, we will get new fresh 24 hours tomorrow. So stick to it. You can follow 8 plus 8 plus 8 to make your life easier and to follow your dreams. And or else you can use like other as I said, the 3 steps to define your dream: review, remind, precisely define your dream with clarity, the roadmaps, pathways, because today is a time. Take your notepad and pen and write down. खाली खाली यहाँ सोचने से नहीं होगा, जब तक आप उसको पेपर पे उतारोगे नहीं तब तक वो हकीकत में नहीं होगा। और stick to it, because जो आप सोचोगे वही आप बनोगे, जो आप सोचोगे वही आप करोगे, जो आप सोचोगे वैसा ही एहसास आपके जीवन में मिलेगा। पॉजिटिव, you'll get positive, some vibes. If you think negative, आपको जो फीलिंग है वो नेगेटिव होगा, तो आप नेगेटिव फीलिंग के साथ अपने सपने को पूरा नहीं कर सकते हो। डिजायर पक्का होना चाहिए। सपने वही देखना है जो खुली आंखों से है। सोते टाइम सपने देखना मतलब वो कोई सही बात नहीं है। So this is what I had wanted to say with everyone, guys. Now we have 10 minutes. All of you can, if you have any question, you can ask me a question, or else I'm done. So once again, thank you so much for giving me an opportunity to interact with all the students. Thank you, ma'am. Students, do you have any question for sir? Yes, ma'am. I have. Yeah, please ask. Yes. सर, जब भी हम अभी जॉब कर रहे हैं, जब हमारा टर्निंग पॉइंट आता है, मींस मैं एफएमबी में अच्छा हूँ और मैं किचन में काम कर रहा हूँ और मुझे उधर जाना है, व्हाट 2 पॉइंट्स बता सकते हो उधर? नहीं, पहले मैं आपको फिर से आपको रिमाइंड कर रहा हूँ, आपको आपकी असली चाहत क्या, आपको बनना क्या है? आपको शेफ प्रोडक्शन बनना है। में जाना है, शेफ बनना है। तो आपको सर, जब आपको शेफ बनना है तो याद रखिएगा आज, और सभी स्टूडेंट्स को मैं बोलना चाहूंगा, शेफ बनना है तो कौन सा शेफ बनना है दोस्त?
सुशेफ। सुशेफ बनना, यही आपके लाइफ में सुशेफ ही बनना है? यस सर। सुशेफ ही बनना है? सुशेफ के आगे क्या है? सुशेफ के आगे क्या है? सुशेफ के आगे क्या है? जनरल मैनेजर। That's what I'm telling you today again and again. What you want to be? You want to be a sous chef? Sous chef is what? Okay. Sous chef के आगे है भैया एग्जीक्यूटिव शेफ। एग्जीक्यूटिव शेफ के आगे क्या है? कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव शेफ। तो यू वांट टू बी ए sous chef मतलब आप एक छोटा सा किचन हैंडल करोगे, एग्जीक्यूटिव शेफ मतलब आप पूरा किचन हैंडल करोगे, अंडरस्टैंड? लेकिन एक एग्जीक्यूटिव शेफ को काम करने के लिए क्या चाहिए? यस, उसको पूरा cuisine, you should know the entire knowledge of a cuisine. Yes, of course, but also you should know how to serve also. And today's chef, now if you see the trends in the market, the executive chefs are becoming a general manager of a hotel. That's what the market demand. Executive chefs are no more only cooking in the kitchen. No, executive chef has to come out in a restaurant and interact with the guests, customers, and understand what they want, what they like, what they don't like, what they want to have. So something like that. So it is not about only a behind kitchen. No, it's a great idea. It's a great. But similarly, when there is a complaint, when there is a guest complaint, understand what I'm trying to say today. When there is a complaint, you may have to interact with the guest as executive chef. So guest can ask you 1,000 questions about housekeeping, front office, which is not related directly with production, but yes. So yes, to become a successful, hospitality professionals, you need to have a knowledge of all four major departments. Yes. Now coming to your point, you have to make a specialization in production. So in which section you want to be? Whether you want to be a specialized in bakery, confectionery, or maybe pastry, maybe like Indian, like curries, like continental, Chinese, Thai, what? That you have to define today. That's what I'm telling you. Define, get clarity today what I want to be, because production is a huge department. Is a huge. मेरी यस पूरी सर। जिंदगी, किसी की अगर पूरी जिंदगी निकल जाए तो भी हम सीख नहीं सकते, बिकॉज हम जिस देश में रहते हैं हर 50 किलोमीटर में हमारा खाना चेंज होता है, और जिस देश में रहते हैं हम Yes, sir. हमारा इट्स लाइक we are a we are a great example of diversity and inclusion to the world. And we are Yes, the sir. first country who has contributed, we are doing that. So similarly in the world, think about it. हर देश का खाना अलग है, उसी तरह से what you want to do. आपको क्या अपने मिट्टी का स्वाद उसको एक नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे उसको लेके जाना है या उस पे काम करना है, तो क्या करना है, फाइंड आउट. एंड हु इज योर रोल मॉडल टुडे? आपको डिफाइन करना है आपको किसके जैसा बनना है, कौन से शेफ के जैसे बनना है. क्या मिस्टर संजू कपूर जैसे बनना है, मिस्टर विकास खन्ना जैसा बनना है, क्या बनना है, विकास खन्ना, किसके विकास जैसे खन्ना। बनना है? हाँ, तो वो आपको डिफाइन करना है दोस्त, और वो करना होगा वो लोग क्या करते हैं, और आज Yes, से वो एटीट्यूड डिफाइन करना होगा कि हाँ यार मुझे यही करना है, यही बनना है. ओके, तो उसके जैसा आपको कम्युनिकेशन स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल, नॉलेज, वो सब कुछ आपकी जिंदगी में लाना होगा, मेहनत करना होगा. मेहनत बिना, याद रखिएगा, बिना मेहनत का कुछ नहीं. सो Yes. दिस इज व्हाट इट इज. यू हैव टू गेट नॉलेज. और आपको कॉर्पोरेट शेफ बनना है या एग्जीक्यूटिव शेफ बनना है, तो आपके सारे सेक्शंस का डिटेल नॉलेज होना चाहिए. Only knowledge, not with regards to cooking, but also with knowledge of the food cost, costing, budgeting, menu planning, merchandising, and design, all sort of things. So this is the right time to work on it. Work on how to design a menu planning, work on, learn some, some food cost formulas. Everything is online, Yes, so sir. so is there any other questions? Have I answered your question, by the way? Yes, sir. Okay, I great. got Is there any other question? You can ask any question. Doesn't matter whether it is related to topic or not. You can ask any questions. And understand there is no stupid question. Every question is a right question. If you don't ask questions today, there is no other day. You can ask somebody also. Any other question, guys? Students, any more question? No, ma'am. Yeah, please ask. Hello, Rudra. Okay. No more questions? No more questions? That's great. Rudra?
Okay. Thank you so much, Mr. Nimbore. What an insight. Wonderfully explain how to dream, how to set goal, and how to achieve that goal. Thank you so much. Thank you so much. Actually, this is a basic thing. See what happens. That's what I'm saying today. For students, what is happening? They are in dilemma: what to do, what not to do, and they're in confused stage. When somebody is in confused stage, what happens? Mind is challenging. You know itself. Yes, no, करूँ नहीं करूँ. Yes. जब हम इस स्टेज में रहेंगे तो फिर क्या होता है? चलो यार, इसको पूछता हूँ, उसको पूछता हूँ, या let me start from tomorrow. Like I'll give you one more example. As I said, as you said, हम सब बच्चे थे, हम सब स्कूल में जाते थे. तो हम जब 5th क्लास में गए, 10th स्टैंडर्ड में गए, या 10th स्टैंडर्ड या 12th स्टैंडर्ड, वेरी क्रूशियल टाइम इन आवर लाइफ. हमारे माँ बाप जो हमें उठाते थे, भाई पढ़ाई कर ले. हाँ पापा करता हूँ. मैं भी कब करेंगे? थोड़ा सा बुक लिया, रात को सो लिया. हम बोलते थे एवरीबडी, मुझे सुबह उठा देना, अलार्म लगा देना. हम लगा भी देते थे, सुबह उठा भी देते थे, वो लोग भी उठा देते थे. बट हम कहाँ उठे? हम उठे फिर सो गए. हमने सोचा चलो थोड़ी देर बात कर लेता हूँ, फिर खेलने के बाद करता हूँ. चलो स्कूल में जाके किसी का कॉपी लेके मैं आई विल कॉपी इट एंड आई विल डू इट. ऐसा करते करते मैम एग्जाम का टाइम आ जाता है. तभी भी हम क्या सोचते हैं, नहीं यार इसका देख लूंगा मैं, आई विल कॉपी फ्रॉम देम. एंड देन दैट इज एक्चुअल टाइम where people are misleading, and the student, like friends are misleading. क्या होता है? एक चीट बना रहे हैं. Then what? आपका जो ड्रीम होता है, आप वो छोड़ के हम क्या करते हैं? हम उस पे काम करते हैं जो शॉर्टकट्स है. मेकिंग चिट्स फॉर द एग्जाम इज अ शॉर्टकट्स. Then we don't have to take a shortcuts in our life. So work on it. फिर ऐसे करते करते पूरी जिंदगी निकल जाती है. हम जस्ट प्रोक्रास्टिनेशन करते रहते हैं. और फिर होता क्या है? मेरे नसीब में यही लिखा था, यही हुआ. नसीब कुछ नहीं होता. यस, बट ये मेहनत करने के टाइम हमारे अपने जिंदगी में बहुत जरूरी है, वो है लक. वो 20% नहीं, वो मैं बोलूंगा 60% चाहिए. 40% तो मेहनत भी चाहिए. सो दैट्स हाउ. अगर सबके पास लक होता तो सबके पास BMW और मर्सिडीज होती. आज अगर सबके पास लक होता तो आज लोग ये डिफिकल्ट टाइम में एक टाइम के खाने के लिए इधर उधर नहीं भटकते. इट्स नॉट, इट्स लक. तो आज की डेट में जैसे है ना, किसी के पास बहुत पैसा है उसको फर्क नहीं पड़ता, और एक बंदा ऐसा है मैम जिसको ये पता नहीं है कि आज मुझे नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, पैसा आएगा नहीं आएगा. सो आई थिंक दैट वे कि नहीं यार, लक भी इम्पोर्टेंट है. once upon a time I was thinking नहीं, 20% luck and 80%, that 80-20 Pareto's principle like that. नहीं, वो नहीं करना है, ये भी इम्पोर्टेंट है. तो हाँ, बट ये इस पे रोना नहीं है, इसको सच करना है. तो थोड़ा सा एफर्ट्स उसमें डालना होगा, कंसिस्टेंटली उसके पीछे दौड़ना होगा. तो वो वही है, और क्या है, राइट? Thank you for motivating our students, sir. It's pleasure is mine. You're most welcome anytime. It's I am actually I also feel happy, because interacting with students is always pride, and everybody should, all the leaders, they should try. But some people, I've observed that they don't have time. Ma'am, we once upon a time we all were students. We were in students, and we should contribute now. Now this is a critical time, and time has given us opportunity to contribute for the society, contribute for the industry. So why not? And how much time? It's 1 hour. But yes, is it 1 hour? Maybe at least today. I don't know how many people are inspired, but at least one person get inspired. I made my day. I'm happy. So that's what it is. If everybody can start doing from their own, then definitely, now it will change. So that's what it is. But we are so stressed. I don't know. I know, like I'm also at home. I'm working from home. I don't know what will happen. But why to think about it? And end of the day, today is not only one company. There are 1,000 company in the world. ये टाइम होता है, ये टाइम चला जाएगा. परमानेंट जिंदगी में कुछ भी नहीं होता है. Everything is temporary. So that's okay. Anyway, that's what it is. So thank you so much. Thank you once again. Thank you, sir. Have a nice day. You too, ma'am. You too. And students, take care. Stay home. Be safe. Don't come out. And live your dream. Live your dream. And still, if you have any doubt, post this session. You can connect me over LinkedIn or Facebook. My number is there. You can connect me. That's not an issue. It's not that only today I will help you. You can connect me anytime.
for any assistance. Yes, sir. You're most welcome. You know, Thank you, sir. yeah, Thank you, sir. take care. Bye. Have a Thank you, nice sir. day. Thank you, sir. Thank you, Thank you, sir. sir.